So let's continue. The point that we had started talking about on the other day was primarily related to the banking industry. We had in fact started talking about the different types of banks. We were talking about the basic features of the different banks. I'll just put forth the same thing. I'll restart with the concept of central bank. Then one by one, we'll try to understand and learn all the banks once again. And then we'll go on to the functions of banking. All right. So let me just share my screen in front of you all. The very first thing that we have to talk about is about the central bank. Now, in the central bank, we had understood that central bank is basically the topmost banking institution of our country. In a sense that it will be the apex body, it will be the top body for all the banking related requirements of the country. May it be the policy setting, may it be the kind of funding to the bank, funding to the government, may it be funding to the banks, issuance of currencies. These all activities will be carried out by the central bank only. And that's where we had started talking about the concept of monetary policy. We had talked about the concept of liquidation. We had talked about the concept of fiscal deficit, like how, when and to what extent the central bank will be issuing the currencies. It is not the case that they can just print it like anything. Then it is basically a banker to the government for all the banking requirements of the government with reference to the collection of taxes. Like जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है वो हम लोग हमारे हमारे बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में डिपॉजिट करते हैं. गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में से वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी मतलब क्या? तो सेंट्रल बैंक. It goes to the central bank, and whatsoever is the requirement of the government, that spending is done through the withdrawals from the central bank only. And it is also the banker's bank, जहां कहीं भी किसी भी बैंक को किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, in the form of funds, in the form of advisory, in the form of consultancy, in the form of control, in the form of regulation, these all things are done by the central government. आपने कई बार सुना होगा कोई कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो अगर अच्छा काम नहीं कर रही है, if they are into the problem, then in that case central bankचा पथक बसलाय त्याच्यावर. Means what? That central bank has appointed a committee, and that committee tries to do the rehab, the reworking of that particular organization to bring it back to the normalcy. That is what are the functions of the central bank. The next thing that we had started talking about was the commercial bank. Commercial bank is basically a concept which you and me see on a daily basis. All the banks with whom we have been dealing on a continuous basis is what we call as the commercial banks. So if we have got some surplus funds, those surplus funds we can deposit with them. They can accept our savings. So commercial bank has primary role of acceptance of deposits and issuance of loans and advances. Please remember, this is one of the most important function of the banking industry. Why? It is also called as the mobilization of savings. होता क्या है कि मेरे पास थोड़े से सेविंग्स हैं. There is some other person, he is having some small savings. There is some another person, he is having some small savings. But when these multiple small savings are consolidated together, it becomes a large amount. And that large amount can be given to someone for the purpose of carrying out their business activities, by which they will be able to produce, they'll be able to provide the services, and by that way they will make the revenue for them. From that revenue they will pay certain amount to the banks in the form of interest. Bank will pay in return some amount to the depositor. So what is happening? This particular process of mobilization of savings work quite well for the government or for the country as such. अगर आपको
आपके देश की ग्रोथ चाहिए, if you want the continuous progress of the country, for that purpose this is one of the most prominent way of doing it. Because if this mobilization of savings would not have been there, then in that case the cash would have remained in the hands of the individuals, and those individuals purchasing power would have kept on going down, because they are not making any kind of investments. Over the period of time the inflation increases. If you are having the money, you're not investing it anywhere, then you yourself are reducing the value of that particular currency. They say money should never be kept idle. If the money is kept idle, its value deteriorates. Am I right? So basically what commercial banks do, they accept the deposits from the public and grant the short-term loans and advances to their customers. Now, short-term here do not mean कि एक 6 महीने के लिए आपको लोन दिया, 1 साल के लिए लोन दिया. Short-term from the banking industry point of view include 5 years का period also. It is one of the important organization to in economic and social development of the country. मैंने ये जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि छोटे छोटे सेविंग्स को इकट्ठा करके उसको मार्केट में घुमाना, ये सर्कुलेशन का काम जो है ये कमर्शियल बैंक्स करती हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं कर रहे होते, then in that case the richer would have become more rich and the poorer would have become more poor, and there would not be any kind of synergy and parity between the people. And for that purpose, it is said that there has to be a good commercial banking system. There has to be the banking industry being so robust that it is able to carry out your development of economy. The public sector banks, now within that there are three categories: public sector banks, private sector banks, and foreign banks. Public sector bank means what? Where the government is having the majority stake into it. The government is having the majority control into it. That is why those are called as the public sector bank. Whereas the private sector banks are those where public at large, not the government, is having the investments into that. The private parties are making the investments into that. And then foreign banks, the banks which are basically incorporated in a country outside India, but having its activities being carried out in India. That is what you call as the foreign banks. What is the public sector bank? The majority stake in these banks is held by the government of India or Reserve Bank of India. The examples are State Bank of India, Bob, Bomb, Boy, PNB, and so on and so forth. In fact, very recently, N. Sitaraman Madam had started talking about the divestment from the public sector banks also. And because of that also, there is a huge kind of movement in the share market in these public sector banks. Then what is private sector? The majority of the share capital of the bank is held by private individuals, not only individuals, but the private sector organizations. These banks are registered as public limited companies. Examples, हमारे पूर्वजों की बैंक ICICI, हमारी पूर्वजी हुई ना. So ICICI Bank or HDFC Bank, or for that matter Kotak Mahindra Bank, these all are nothing but what you call as the private banks. Then the third category into that, foreign banks. These banks are incorporated in foreign countries but having the operations in our country, like the Deutsche Bank, HSBC. HSBC is one of the prominent name. Why? Because it is having the activities at so many places in our country. हर्षद मेहता स्कैम में क्या हुआ था? मिस्टर आकाश मालपुरे, काइंडली सी द टेलीविजन शो कॉल्ड एज स्कैम 1992. यही नाम था ना. तो यू इश्क रिस्क है तो इश्क है. यू जस्ट लुक एट दैट एंड यूल अंडरस्टैंड कि हर्षद मेहता स्कैम में क्या हुआ था. ओके. तेच रे, टेलिव्हिजन शो म्हणजे काय असतं रे बाबा. टेलिव्हिजन शो पण हे सिरीज मध्येच असायचे. काय राव, सगळ्या गोष्टींमध्ये खोड काढतोस राव तू माझी. हे बरोबर नाही. हे पचून घेणार नाही मी. हे जमणार नाही आपल्याला.
मी सांगतोय आधीच पहिलेच, मी काय केलं ना मला नाही बोलायचं तू. मी खरं सांगतो हे बघ लोकांना कळलं आता कोण आहे ते. मी खरं सांगतो मी मी ना हे पचवून घेणार नाही हे आपल्याला चालत नाही. बर का? खपून घेतलं जाणार नाही हे. तेच. असो, जाऊ दे आता काय बोलावं माणसाने, किती बोलावं आणि हां. मी काही केलं तर काहीच होत नाही. अरे राजा असं कसं होणार? तू काही पण बोलतोय राव. मी जर काय करायला लागलो तुला कळेल की मी काय करू शकतो. असू देत. Let it be. So let's come ahead. The next point, that is after the commercial banks, the cooperative banks, these are basically those which are incorporated as cooperative societies and having the banking operations. They are not only interested to carry out the helping of each other activity, but they are also interested to help each other from the financial point of view. And that's why those are called as cooperative banks. कई बार आपने सुना होगा there is something called as urban cooperative bank, rural cooperative bank. Now what is the difference between an urban and rural cooperative bank? I need not explain it. An urban cooperative bank is basically the one which is having its operations into the urban areas, whereas the rural cooperative bank will be having its activities primarily in the rural areas of the country, and that's what is the difference between these two. That's it. So now there is a difference between a cooperative bank and a credit cooperative society. But currently in the current scenario, the cooperative credit societies have also come within the lenses of the Reserve Bank of India, which was not the case earlier. The cooperative society engaged in banking business is called as cooperative banks. These banks are also subject to control and inspection by Reserve Bank of India. Control does not mean कि शक्तिकांता दास वो कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक में शक्तिकांता दास ने फोन किया भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा सब ठीक चल रहा है तुमको कोई पैसा बीसा का जरूरत है मैं भेजे पैसा इधर से तुम किसको किसको पैसा लोन पे दे रहा है दे डोंट डू समथिंग लाइक दैट. What is this subject to control and inspection by Reserve Bank? This simply means that these organizations, that is the credit cooperative banks, they are required to do certain submissions on a regular basis to the Reserve Bank of India. And if RBI finds any kind of deviations into it, any kind of miscommunications into it, then the RBI can take the action on these all organizations also. जो मैं पहले आपको कह रहा था कि एक पर्टिकुलर कमिटी अपॉइंट करेगी एंड दे विल ट्राई टू सेंड दैट कमिटी टू क्रॉस चेक वेदर ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग कंडक्टेड करेक्टली और नॉट. क्यों? तो क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंकिंग इज अ वेरी रिस्कियर अफेयर. होता क्या है, नॉर्मली 10-12 लोग साथ में आते हैं जो आपस की पहचान वाले होते हैं. वो अपने जेब से बड़ा बड़ा पैसा पहले इन्वेस्ट करते हैं. मान लो मैं कोई बड़ी बड़ी 10 पार्टियां हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ या 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 करोड़ रुपए जमा किए. अब ये 2 करोड़ रुपए उठा के ये सपना को नहीं देके आते हैं. ये 2 करोड़ रुपए उठा के ये जाके आरबीआई से परमिशन लेके आते हैं कि हमको हमारी बैंक खोलनी है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए the minimum paid up capital required, free reserves required is 2 crore. For the NBFC and for the banking one, it is, I think, 5 crore. I'm not sure about that. But whatever. Only after that they can start with their banking activities. अब ये जाके पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक को बोलेंगे कि तुम हमारे मेंबर बनो, फिर हमको तुम हमारे पास तुम डिपॉजिट्स दो, फिर हम तुमको लोन्स भी देंगे. They do it. But what happens? They start accepting the deposits और जिसके साथ पहचान होती है, जो अपने घर वाला बंदा होता है, उसको पहले लोन देते हैं और उनको वो फॉर्मेलिटीज कम हो जाती है. And by that way, they dupe the public money. And that is what is not expected. And therefore, there is a need of control
from the RBI. क्यों कोऑपरेटिव बैंक्स ज्यादा डूबती है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर? क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहीं पे भी आपको इतने बड़े बड़े घपले देखने को नहीं मिलते हैं जितने कोऑपरेटिव बैंक में मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे साठ गांठ वाली राजनीति चल रही होती है. People are coming together, having interest, having knowledge, having contacts, and वशील्यानी काम होता है, right? So cooperative banks, credit cooperative banks generally grant loans for productive purpose as well as for other purposes. ये लोग मतलब लिटरली शादी के लिए लोन देते हैं, पता है आपको? पर्सनल लोन इज नथिंग बट काइंड ऑफ दैट ओनली. आप व्हीकल के लिए लोन लेके जाओ, आप घर बनाने के लिए लोन लेके जाओ, आप जो कर रहे हो उसके लिए लोन ले जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग. The rate of interest is usually low for the credit cooperative banks. ये कहने की बातें हैं. In fact, it's the reverse way around now. The credit cooperative banks have more rate of interest as compared to the public sector or the private sector organizations. Personal loan. Whensoever you are demanding for a personal loan, there may be a question for what purpose you are taking this particular loan, but they cannot check it. They cannot come and cross verify कि आप सच में उसी पर्पस के लिए लोन ले रहे यूज कर रहे हो या. अब जैसे आप अगर गाड़ी के अगेंस्ट लोन लेते हो तो आपको जो चेक मिलता है या डिमांड ड्राफ्ट जो मिलता है वो गाड़ी की कंपनी के नाम पे मिलता है, आपका जो डीलर है उसके नाम पे मिलता है. अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीन के सप्लायर के नाम पे मिलता है. अगर आप घर खरीद रहे हो तो इन दैट केस सेलर के नाम पे मिलता है, बट या फिर वो जो बिल्डर होता है उसके नाम पे मिलता है. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ पर्सनल लोन तो चेक तो तुम्हारे ही नाम पे आएगा ना. So how will they cross verify? How will they keep the control कि आपने सच में जाके अगर सपोज गाड़ी खरीदने के लिए लिया, सॉरी गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, अगर सपोज आपने एक्स काम के लिए पर्सनल लोन लिया तो वो आप एक्स काम ही कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स आउट ऑफ दैट, राइट? There are three types of cooperative banks operating in our country, that is primary credit. कौन था वो? किसने बनाया था वो सर्कल? वंश जोशी. Where are you? अनम्यूट कर बेटा खुद. नहीं, ऐसे कैसे गलती से होता है? How these things happen by mistake, I don't understand this. I thought it was for my own note. Oh my God. तू पहली बार बैठा है लेक्चर में? आज तक के लेक्चर अटेंड नहीं किया तूने? पहले ये कहानी नहीं हुई हमारे पास. ये क्यों करते क्यों हो तुम लोग ये? मतलब तुमको इसमें फील क्या आता है? हाँ, हंसो. बढ़िया फ्लो होता है, एक मस्त लिंक चल रही होती है,
और उसके बाद आते हैं हमारे किरदार, और ये होते हैं लिंक तोड़ने के लिए बेकरार। और जब मैं इन सब के आगे करता हूं तकरार, तो ये कर देते हैं हर चीज का इनकार, और बाकी सारे दोस्त इनको बोलते हैं कि सॉरी बोल देना यार, नहीं तो मास्टर तो ठीक है, घर वालों की भी पड़ेगी तुझे मार। और लिया अगर मैंने किसी का नाम, तो ये होने की कोशिश करता है फरार, पर मास्टर इन सब के नाम लेता है हर लेक्चर में बार बार। हंसो, लेट मी गो अहेड नाउ, क्योंकि अच्छा, व्हेन यू वांट टू बिकम अ पोएट बट पेरेंट्स फोर्स यू टू बिकम अ टीचर, देन यू बिकम एम्प्टी। नहीं बेटा, ये पोयम नहीं थी, ये तो मैंने सिर्फ ता को माँ, माँ को ता जोड़ा है, और कुछ भी नहीं था। ये कोई भी कर सकता है, तुम लोग भी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, यू नो। वेल, फर्क सिर्फ इतना है, थोड़ी हिंदी ज्यादा अच्छी आनी चाहिए, और कुछ नहीं है ना स्नेहा। हिंदी आए बगैर ये सब कुछ आना बड़ा बड़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो भी था मस्त था, रिकॉर्डिंग में सुनना बेटा। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स, हाँ, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली हैं या नहीं। मेरे ख्याल से मैंने अपलोड की ना रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस सेशंस। हैव आई अपलोडेड इट? कुछ कुछ अपलोड किए हैं, कुछ बाकी नहीं। तुम्हारे बाकी नहीं यार, कहाँ दिख तो नहीं रहे मुझे। नो कंटेंट फाउंड बोल रहा है, ये कौन था? यस सर। भाई कौन से वाले वीडियो देख रहा है मेरे नाम पे? घर वालों को क्या बताता है और मेरे मेरे नाम पे खपा रहा है सब। वेल, बाबा रामदेव जी के यही रह गया था बेटा, बस तुम पेट अंदर पेट बाहर, पेट अंदर पेट बाहर ही करते रहो। जय, तू तो वो भी नहीं कर पाएगा बेटा, तू है इतना सा, तेरा पेट अंदर पेट बाहर, पेट अंदर पेट बाहर, कहीं फीलिंग ही नहीं आएगी। तेरा तो पेट लेफ्ट और पेट राइट ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, so cooperative banks are basically divided as primary credit societies. Now what these primary credit societies are, जो रूरल लेवल पे इंडिविजुअल, स्मॉल लेवल पे इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, they are basically the farmers or the people into very low income category, and that is what people do, people form in the form of primary credit societies. Then credit co-op, central cooperative banks, these are basically the banks which are having the control of a particular district. Like, I'll give you some example on this. In Pune, we have got Saraswat Bank, we have got Cosmos Bank, we have got DNS. ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम है, पता है आपको? DNS, RBL, TJSB, ये सारे क्या है पता है? ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, द प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। डीएनएस, डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। टीजेएसबी, थाने जनता सहकारी बैंक मर्यादित। और इवन फॉर दैट मैटर आरबीएल, सुन के इतना जबरदस्त लगता है, बाद में पता चलता है रत्नाकर बैंक कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऐसा उसका नाम है। सो रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऐसा कुछ तो है। सो ऑल सेड एंड डन,
हाँ, श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, एसवीसी, इतने खतरनाक खतरनाक, मतलब शॉर्ट फॉर्म से तो इनकी वैल्यू ही बढ़ गई है. So these are nothing but the primary cooperative societies or banks. Then there are the central cooperative banks which are having the control over all the cooperative banks within that particular district. And for all the district cooperative banks, we have the state cooperative banks like Pune District Central Cooperative Bank. It is for the Pune district. And then Maharashtra State Cooperative Bank is for the state of Maharashtra, right? Then another one, that is development banks. I hope this particular discussion is going fine. I have tried to pick up the statements from your textbook only. I have not tried to put in my words into this, because what happens, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगेगा. अदरवाइज होगा क्या, अगर मैं सारी चीजें मेरी लैंग्वेज में यहाँ लिख दूं, आपने पढ़ा टेक्स्ट बुक में कुछ और, पीपीटी में कुछ और उसके बाद में हम लोग जब आंसर्स लिखते हैं तब कुछ और लैंग्वेज, और जो एग्जाम में लिख के आएंगे वो तो मतलब क्या से क्या हो गया देखते देखते, दैट वुड बी द काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट? So that should not happen, and that's why I'm trying to restrict myself to the language of the textbook which has been given to you. I hope this is absolutely fine for everyone. मैंने इसीलिए चैप्टर 1 में भी वही किया और यहाँ भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. So financial institutions which provide the medium to long-term loans to the industries, the organizations which require more money, the organizations which are having more gestation, which cannot start generating the revenue from the very next day. Like take the example of a factory. Factory का incorporation इतना आसान नहीं होता है. फैक्ट्री बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, उसमें मशीनरीज लाना, मशीनरीज लाके उसमें उसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करना, ये सारी एक बहुत बड़ी प्रोसीजर. इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 1 year, इट मे टेक 3 years, डिपेंडिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. मतलब हम लोग अगर सोचें कि हम लोग यार आज हमने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कल से हमारा बिजनेस ट्रेडिंग में, यू कैन डू दिस, बट मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स नॉट दैट इजियर अ टास्क. And therefore, these organizations require the medium to long term kind of loans, which will be the loans for 15 years, 20 years. And those loans are given not only for the purpose of construction, also for the purpose of gestation. कि आप जब gestation में हो, gestation means what, the people who are still carrying out the activities and are not able to do the commercial operation. They are not going to generate the revenue for next 3 years. They are only going to spend the money. Paisa, 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 udate raho. And when these kind of things happen at that time, these development banks are basically of huge help and serious help, which is required. Development banks assist in the promotion, expansion, and modernization of the industries. The rapid development of industries in India after independence required huge financial investment and promotional efforts led to establishment of these institutions. क्यों? मैं अगर कोई प्राइवेट पार्टी के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं मेरे को लोन दो, मैं अगले 3 साल तक के तुमको उसके बाद मिलेगा नहीं, उसके बाद 3 साल बाद मैं पैसा वापस देना चालू करेगा. Just imagine this is a situation. Who will give me the loan in that case? Are you able to understand this? These banks also subscribe to the capital issues of these industrial undertakings depending upon the situation. They may provide it in the form of loans. They may provide it in the form of equities. आजकल हम लोग जिन्हें प्राइवेट इक्विटी के नाम से जानते हैं, आजकल जिन्हें हम लोग स्टार्टअप फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं, those originally were the development bank. Those were the works actually being done by the development banks. स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का काम डेवलपमेंट बैंक्स किया करती थी. अब वो चीज इवॉल्व हो गई है. नाउ यू डोंट नीड दिस डेवलपमेंट बैंक्स. अब मार्केट में इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, in the form of fund managers, in the form of private equities, in the form of angel investors,
in the form of HNIs, the high net worth individuals, and they are ready to take the risks. आपको क्या लगता है ये व्हाइट हेड जूनियर वाला क्या ऐसे वैसे ऋतिक रोशन को लेके बैठा हुआ है? और फॉर दैट मैटर द कंपनी लाइक बिग बास्केट hiring शाहरुख खान, is it that easier a task? Or if you take the example of the company like Myntra, no, Myntra का नाम नहीं, sorry, Shiv. If you take the example of company like Flipkart hiring Ranveer Singh, or for नहीं Ranveer Singh नहीं, Ranveer Kapoor, or for that matter Alia Bhatt, or the kind of people, why they are able to do this? How are they able to carry out this activity? Because they have got huge funds from these private equities, जो पहले डेवलपमेंट बैंक्स के पास से पैसा मिलता था. यस, बाइजूस ऑन द सेम लाइंस. अनअकैडमी की एड बंद हो गई, वेदांतु की एड बंद हो गई, क्योंकि इनके प्रमोटर्स ने जितना पैसा लगाया था वो खर्च हो गया. पर बाइजूस को $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, मतलब 50 करोड़ डॉलर्स, मतलब 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट. अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर मिलेगा तो वो कंपनी क्यों नहीं टिकेगा? करेक्ट और नॉट? बट द सेम एक्टिविटी अर्लियर वाज डन बाय whom? बाय दीज डेवलपमेंट बैंक्स. इसीलिए आजकल हम लोग डेवलपमेंट बैंक्स के नाम नहीं सुनते हैं. पहले बंदे ने एमआईडीसी में फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले इसका विजिट आईएफसीआई पे होगा या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में होगा, और उसके बाद में इनकी एक्टिविटीज चालू होती. बट नाउ दोस ऑल थिंग्स हैव गॉन. नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम मोर प्राइवेट, वर्ल्ड हैज बिकम मोर पब्लिक, इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, ऑफ प्राइवेट सेक्टर. They also provide the technical advice. Even the private equities, the startup funds, they do the same thing. The Industrial Financial Corporation, Finance Corporation of India, State Financial Corporation of India are the examples of the development banks in India. You can write a line there. In the current scenario, the private banks are carrying out the similar activities. Sorry, private equities are carrying out the similar activities as that of the development banks, as that of the development banks. ऐसा कभी होता है क्या तुम लोगों ने रजिस्टर किया, जब भी रजिस्ट्रेशन की लिंक भेजता हूं अगर जूम का, तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद में तुमको मेल नहीं आई, ऐसा कभी होता है क्या? कहां से आते हैं फिर ऐसे लोग? जो मेरे को आज शाम से एक लड़की ने इतना परेशान कर रखा है ना, मैंने उसको कहा जाके तू स्पैम में चेक कर, बोलती है स्पैम में भी नहीं है. फिर वो उसको बोला कि फिर मेल, फिर इसका मतलब उसने नहीं, गूगल माल फंक्शन नहीं हुआ है, उसने जो मेल आईडी डाली है दैट मस्ट बी रॉन्ग, इसीलिए तो मेल नहीं आई ना. हाँ, दैट हैपेंस. वेल एनीवेज, होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है. हाँ, डॉट वगैरह का मिस्टेक होता है ना, बहुत सारा घोटाला किया होगा. वेल
हम लोग घोटालों को छोड़ते हैं और जो अच्छी बातें हैं वैसी पढ़ते हैं. Let's go ahead. Yeah, RBL is not a cooperative bank. RBL is a private bank now. Earlier it was a cooperative bank, but now it has become a private bank. Correct, अथर्व. इसीलिए तो उसका बजाज फिनसर्व के साथ टाई अप हुआ, जिसके तहत वो लोग क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं. RBL and Bajaj Finserv, these two companies have come together and they both are selling the credit cards and the personal loans on a combined basis. Insurance bhi, correct? Yes. The next one, that is exchange banks. यहाँ पे अभी आप कभी भी ऐसे मत सोचना, नहीं तो जैसे नाम सुना आप खुश हो गए, ऐसे अंदर से फीलिंग आई तुम लोगों को. You would go there, you will give your person there and you'll get a new person. Exchange bank. Like they are having a bank where they will be giving you the change on a continuous basis. It's not the case. Do not expect your X to get changed so fast. Right? इतना आसान नहीं होता. जहां भी X वाली सिचुएशन है उनके लिए कह रहा हूं. So these are basically the organizations. X भी होनी चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं ना. जिनके हैं उसी के लिए बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक इन जनरल. हाँ, मैथ भी ऐसा नहीं होता, इसलिए पता नहीं. Facilitates foreign exchange transactions. There are so many international transactions that you are supposed to carry out in these days, because nowadays the organizations have become more multinational. Everyone is interested to have an international transaction. हर बंदे को लगता है कि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए. वो कौन सी पिक्चर आई थी, सरफरोश. सरफरोश मूवी में देयर वाज दिस फेलो, वो उसको एक रुमाल दिया गया था. ही वाज द खबरी ऑफ पुलिस. तो उसको एक रुमाल दिया गया था और वो ऐसे ऐसे रुमाल, आसमान में लाखों तारे, समथिंग लाइक दैट ही यूज्ड टू डू. एंड फिर वो उससे आखिर आखिर में आमिर खान आस्क्स हिम कि आजकल क्या चल रहा है. सर आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है. तो जब भी आपका ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलेगा तो आपको इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस या एक्सचेंज बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, because these organizations basically facilitates or support you people in the financing of the foreign trade transactions. In a sense, जब भी आप किसी फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो तो कई बार ऐसे होता है दैट यू एंटर ऑन अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में जब आप एंटर करते हो तो आपको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ती है और उनसे पैसा आने के पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. अब आपके पास वर्क ऑर्डर अगर आ गया, एक याद रखो हमेशा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इफ यू हैव रिसीव्ड अ वैलिड वर्क ऑर्डर, देन both the parties in that, supplier as well as buyer, are bound by it. और इस वर्क ऑर्डर के बेसिस पे आपको बैंक्स फंडिंग करती है. बैंक्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और आप ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने वाले हो, और जब आप पूरा करोगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा. You will have पैसा ही पैसा, and for that purpose these foreign exchange transactions become important. All international banks will be called as the foreign exchange bank, exchange banks in that case. Work order is a kind of assurance. Yes, purchase order कहते हैं work order. Why Serum Institute of India was not ready to supply their first tranche of vaccines? If you would be observing, अगर आपने न्यूज को ट्रैक किया होगा उस समय पे, तो सीरम इंस्टीट्यूट के पास वैक्सीन रेडी हैं, ट्रक्स में भरे हुए हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लोडेड थे, एंड दे वर नॉट अलाउिंग टू मूव इट. फुल सिक्योरिटी कंट्रोल के बावजूद वो वहां से मूव नहीं करने दे रहे थे. क्यों पता है? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट हैड नॉट रिसीव्ड द वर्क ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट.
मिस्टर पूनावाला, आदर पूनावाला बड़े ही आदर के साथ रुके हुए थे कि जब परचेस ऑर्डर आएगा तो हमारे यहां से गुड्स सप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या होता, इन्होंने वैक्सीन सप्लाई कर दी होती और बाद में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इनको घुमाया होता कि तुम्हारे पास वर्क ऑर्डर नहीं है, हम कैसा पैसा देगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग काम करता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग काम करता है। तुमने वर्क ऑर्डर लेना मांगता था ना, फिर हम कैसे करेंगे, तुम मोदी जी से बात करके आओ, फिर मोदी जी से लिखवा के आओ, सिर्फ बात करके कैसा चलेगा। मोदी जी से कि यार आदर, why don't you take the purchase order? I'll try to check it. Once I get it, I'll revert back. This is how that particular thing happens. नहीं नहीं, आजकल सार्थक, government offices and government officers have seriously become very much professional. They have not remained the earlier days government officers. Things have changed a lot. Do these banks help in forex market exchanges? Foreign exchange करना आजकल कोई बड़ी बात रही नहीं की है. It has become a very normal thing. It issues the LC, leaving certificate नहीं. LC here is the letter of credit. ये होता क्या है, क्यों होता है? मान लो आप किसी इंटरनेशनल पार्टी के साथ डील कर रहे हो. अब ये जो इंटरनेशनल पार्टी है वो कहती है तुम गुड सप्लाई करो तब मैं पैसा देगा, या फिर रिवर्स पे राउंड, आपने सपोज फॉरेन से कुछ गुड्स खरीदे, गुड्स ऑर्डर कर दिए, अब वो बंदा बोलता है कि तुम पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो फिर मैं तुमको गुड सप्लाई करेगा. तुमको डर, किस चीज का डर, डरो, अरे डर रहे हो कि नहीं, तुम लोग डर रहे कि नहीं? हाँ नहीं, अरे डरो बोल रहा हूं ना, तुमको डर, किस चीज का डर, कि अगर मैंने उसके अकाउंट में पैसा डाला और उसने कुछ नहीं भेजे तो डर, डर रहे हो ना? तो ये पॉइंट, भाग कहां जाएगा रे, है उधर ही, पर हम उसको वापस ट्रैक करने जाएंगे, वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा आया ही नहीं एंड ऑल दैट. तो केस फाइल एंड ऑल दैट विल बी अ लिटिगेशन और नॉट. लिटिगेशन में जाने, हमको तो गुड्स में इंटरेस्ट है, लिटिगेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए बोल रहा था कि डरो, तुम लोग उसको कैजुअली ले रहे हो. तो अब मैंने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया और उसने अगर गुड्स सप्लाई नहीं किए, मेरे लिए तो पंचायत ना. एंड फॉर दैट पर्पस आई टेल हिम नहीं नहीं तू गुड्स भेज फिर मैं तुमको गुड्स दे मैं तुमको पैसा देगा. फिर वो डर जाता है. कैसा डर जाता है? मैं इधर से गुड्स भेज देगा, उसको गुड्स मिल जाएगा, वो गुड्स का डिलीवरी ले लेगा और उसके बाद पैसा ही नहीं दिया तो उसको भी डर, इसको भी डर. एंड दिस डर इज नॉट गेटिंग कैंसल्ड, because dar upon dar is cancelled na, but that is not getting cancelled. So for that purpose we have these exchange banks, or even the commercial banks do this particular thing these days. They issue this as a document called as letter of credit. They give your credit worthiness to the third party, to the foreign party. They inform them through that letter of credit that you supply the goods. The moment goods reach here in India, you will get the money into your account from this person, and if this person does not make you the payment, then bank will make you the payment. That means it's a kind of bank guarantee. बैंक आपके बिहाफ पे क्रेडिट वर्दीनेस सर्टिफिकेट दे रही है कि आप इज्जतदार इंसान हो, कि आपकी मार्केट में वैल्यू है और आप पैसा देंगे. करेक्ट?
Then it also discounts the bills of exchange, international bills of exchange, if at all there are, and it provides you the remittances services. Remittances means what? जैसे हमारे देश में हमको ट्रांसफर करना होता है, यस, काइंड ऑफ इंश्योरेंस. हमको अगर देश में हाँ, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या? मिस्टर जयजाए, डू यू मीन टू से दैट बैंक्स आर डूइंग द वर्क फॉर द चैरिटी? Banks are carrying out the activity for paisa and only paisa. समझा क्या? If money is not paid, why will they be issuing the letter of credit? In fact, that letter of credit value, उसके अगेंस्ट जो फीस होती है, that is linked to कि आपके अगेंस्ट कितने रुपए की क्रेडिट दे रहे हैं. अगर वो आपके अगेंस्ट 5 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं तो 5 करोड़ का 0.01% मतलब 5 लाख रुपया वो तुमसे फी लेते हैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट इश्यू करने के लिए. राइट. देन बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे के सारे फॉरेन बैंक्स विल बी डूइंग दिस एक्सचेंज बैंक का एक्टिविटी. द नेक्स्ट वन, दैट इज रीजनल रूरल बैंक. एकदम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से उठा के धम करके नीचे गिर गए तुम और सीधा हमारे देश की मिट्टी में पहुंच गए जहां हमारे पास है रीजनल रूरल बैंक. वर्क ऑर्डर कम्स फर्स्ट इन प्रोसेस और लेटर ऑफ क्रेडिट. वर्क ऑर्डर ऑफ कोर्स तनिष्का, जब तक के वर्क ऑर्डर नहीं आएगा तब तक के पैसे की जरूरत कैसे पड़ेगी? तुम्हारा लॉस कैसे है मिस्टर ओम खांडरे? 5 लाख में तुमको 5 करोड़ रुपए की वैल्यू मिल रही है मार्केट में, गुड्स आएगा, वो गुड्स पे तुम वो 5 लाख रुपए का खर्चा जोड़ देना ना. यस और नो? हाँ. Regional Rural Bank, this was basically for the purpose of developing banking systems in the rural part or the semi-urban part of our country. This is basically sponsored by the public sector banks. Capital comes from central government. CG is central government 50%, SG is state government 15%, and sponsorer bank that will be providing you the 35% of funding. They basically mobilize the funds from the rural and semi-urban areas and provide funds to the small and marginal farmers. इतना ही, इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, because in the current scenario RRBs have very limited role to play. ये कब हुआ करता था? जब हमारी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम्स वीक थी इन द रूरल एरियाज. आज आप किसी भी नूक कॉर्नर एरिया में चले जाओ हमारे देश के, you'll be finding different kind of commercial banks having their functions in that area, and therefore they will not be having any kind of problem in the banking industry. Then investments bank, ये बैंक पैसे में डील नहीं करती, ये पैसा लाती है. ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, ये वाली एक्टिविटी नहीं करती है. ये एक्चुअली आपके लिए पैसा किधर से आएगा, आपने किस टाइप का पैसा मार्केट से उठाना चाहिए. किस टाइप का मतलब क्या? whether you should be taking it in the form of borrowing, whether you should be taking it in the form of equity. If you're taking it for borrowing, whether it should be a short term borrowing, whether it should be a long term borrowing. You should be taking the funds from the public sector bank, you should take the funds from the private sector organization. These all things is what is done by the investment bank. आप तक HNI लाने का काम, प्राइवेट बैंकर्स, प्राइवेट इक्विटी को लाने का काम, ये सारा काम कौन करेगा? तो इन्वेस्टमेंट बैंक. राइट. दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू द कस्टमर्स. फाइनेंस लाके देगी, फाइनेंस करेगी नहीं. राइट. Yeah, there are so many examples. Merrill Lynch is a gone organization. It's a Merrill Lynch, in fact, if you'd be knowing, there was this subprime crisis that had happened in US. पता है आप लोगों को? अमेरिका में जब अंकल सैम, मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर was the president, during his time there was this subprime crisis that had happened. सबप्राइम क्राइसिस मतलब क्या? उस पीरियड में वहां के प्राइवेट बैंकर्स ने बहुत सारे लोगों को
जिनकी कैपेसिटीज नहीं थी, जिनकी औकात नहीं थी, हमारी भाषा में कहा जाए, तो उनको लोन्स दिए। क्यों? तो ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए रेडी थे। और बाद में पता चला कि इनकी सच में औकात नहीं है, और ये लोग उठा के इनको प्रॉपर्टीज वापस देना चालू कर दिए कि हमें प्रॉपर्टी लेने की कैपेसिटी नहीं है, हमसे तुम प्रॉपर्टी वापस ले लो, हम पैसा नहीं देंगे। अब बैंक्स के पास प्रॉपर्टीज इतनी हो गई कि उसको मार्केट में बेच भी नहीं पा रहे थे, सब लिक्विडिटी नहीं थी। कैसे हुआ था, थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। अब मेरे सामने कुछ नाम है, I'll just pick up those names now. सपोज सबसे पहले आरती के पास एक प्रॉपर्टी थी, राइट? आरती ने $10,000 में ये प्रॉपर्टी अदिति को बेची, राइट? अब अदिति का मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस था, इसलिए उसको वो लोन भी इजीली मिल गया। अब अदिति को पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए अदिति ने वो प्रॉपर्टी उठा के आदित्य को बेच दी। पर आदित्य को पैसे की जरूरत थी और एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी की भी जरूरत थी, तो ये बैंक के पास गया। बैंक ने कहा यार तुम्हारा ना क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तुम्हारा सिबिल रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करेगा ना, मार्केट में सबको 3% से लोन देता है, मैं तुमको 6% से लोन देगा, तुमको चलता रहेगा तो मैं तुमको लोन देगा। अब $10,000 वाला वो प्रॉपर्टी अदिति इज सेलिंग टू आदित्य एट $11,000। अब $11,000 में जब वो बेच रही थी अदिति प्रॉपर्टी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? $10,000। बिका कितने में? $11,000 में। $11,000 में आदित्य ने ये प्रॉपर्टी खरीदी विद 6% इंटरेस्ट। वहां पे 100% फंडिंग भी करते हैं। अब $11,000 आदित्य को पता चला, मतलब लिक्विड सस्ता, लिक्विडिटी ज्यादा है मार्केट में, लोन्स मिल रहे हैं। आदित्य कॉन्टैक्ट्स आकांक्षा, आकांक्षा भी वही कैटेगरी में है कि मेरा क्रेडिट वर्दीनेस कम है, मेरा सिबिल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर्स, प्लीज डू नॉट लुक इनटू इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आदित्य ने आकांक्षा को कन्विंस किया, आकांक्षा यू कैन परचेज दिस प्रॉपर्टी ओनली फॉर $12,500 एंड यू विल इमीडिएटली बी गेटिंग द लोन अगेंस्ट दैट। आकांक्षा $12,500 में प्रॉपर्टी खरीद लेती है। अब ऐसे करते 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 अनघा तक वो आकांक्षा से आकाश, आकाश से आकाश मालपुरे, आकाश मालपुरे से अमूल्या, अमूल्या से अनघा। अब जब प्रॉपर्टी अनघा तक पहुंची तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई $25,000। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? $10,000। 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई $25,000। अब ये $25,000 की प्रॉपर्टी अनघा ने खरीद तो ली, उसके अगेंस्ट उसका मंथली ईएमआई आ रहा था कुछ $250। अनघा का पूरा महीने का इनकम $600। $600 में से $250 प्रॉपर्टी के ईएमआई और $350 में पूरा महीना निकालना अनघा को अवघड़ जा रहा था। अनघा ने क्या किया? अनघा गई बैंक के पास, भाई ये घर की चाबी ये तुम रखो, मेरे को ना प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे को $250 देना बहुत मुश्किल है, मैं $100 में ना किधर रेंट पे रह लेगी, दैट विल बी मोर इजियर। मतलब $150 बच गया ना, एंड दिस इज वेरी मच इजियर देयर, दे कैन सरेंडर। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में मैं सपोज एक प्रॉपर्टी लेके आया 50 लाख रुपए की, 50 लाख के अगेंस्ट बैंक मेरे को फंडिंग ही 40 लाख का करता है। 40 लाख का मंथली ईएमआई $40,000। अब मेरे को अगर ₹150 महीना, महीने सर ₹150 रोज, महीने का 4,500 कैसे निभाएगा? मतलब मुश्किल है। आई के नॉट गो टू द बैंक कि नहीं नहीं ये जो तुम ₹40,000 महीने का बोल रहे, पहला 2-3 महीना तो जम गया, पर अभी नहीं जम रहा, वो फ्रिज भी खराब हो गया मेरा, मैं जमाएगा किधर? एंड आई व्हेन आई गो टू द बैंक, ये चाबी रखो, कल से मैं ईएमआई नहीं देगा, बैंकर विल कन्विंस मी that you have got the capacity and you will pay the money। और ये तो छोड़ ही दो, बैंकर के पास इतनी कैपेसिटी है, वो कन्विंस कर देगा कि तुम एक प्रॉपर्टी और लो, उसका भी ईएमआई तुम ही देंगे मेरे को। दिस इज हाउ द थिंग्स गो इन इंडिया, दे डोंट लीव इट लाइक दैट, बट इन यूएस दे कुड नॉट। और इस तरह से इनके पास प्रॉपर्टीज इकट्ठा होना चालू हो गई। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी रे? $10,000। बैंक ने फंडिंग कितना किया था?
$25,000, $15,000 तो $15,000 का लॉस तो उसी दिन पे हो गया बैंक का। और जब मार्केट में अचानक से प्रॉपर्टी का सप्लाई बढ़ेगा तो रेट तो और नीचे उतरेंगे ना। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विथ बैंक ऑफ अमेरिका, Merrill Lynch, and Lehman Brothers. These three organizations declared themselves, these are the banks, these three bankers declared themselves as bankrupt. उस समय पे चाइना इन्वेस्टेड $1,200 million in US banks to bail them out. कितना? $1,200 million ये चाइना ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया था। इसका मतलब ये है कि चाइना कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यूएस एट ऑल। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। सो इस तरह से वो सब प्राइम एक्टिविटी हुई थी। तो पॉइंट इज व्हाट व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज Why China did that? अरे किसी न किसी कंट्री को तो बेल आउट करना ही था ना, या मल्टीपल कंट्रीज ने मिलके बेल आउट किया होता, क्योंकि चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत थे इसलिए उन्होंने कर दिया बेल आउट, और चाइना का कंट्रोल बन गया ना ऑन दोज ऑल बैंक्स। एंड चाइना इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, सॉरी कम्युनिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिस्ट कंट्री, वहां लेबर लॉस चलते हैं। वेल एनीवेज, सो मेरिल लिंच is not an investment bank anymore now. Actually कहानी वहां से स्टार्ट हुई थी। We have so many investment banks जो कि आपके लिए फंडिंग करते हैं। या JP Morgan is there, Fidelity is there, and there are so many of those. They run their mutual funds. Edelweiss is there, which is having the investment banking activity. Facilitates mergers and acquisitions, provides research and advisory services, do not deal with the general public. They only deal with the organizations and business firms, right? So that's about the investment banks. The next category that we are going to talk about is the spatial banks. इनका काम एक्सक्लूसिव है, इनकी वैरायटी अलग है। The export and import bank, they basically provide you the facilities in the form of exports and imports. These are not exchange banks. ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एडवाइजरीज, ट्रेनिंग, वो काम करते हैं। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, basically provides the funding to the small industries in the form of low interest rate loans, investment in the form of equity, subsidized loans to them. These all things are done by SIDBI, NABARD in the rural and agricultural development. But these all organizations do not fund the organizations directly. They do the funding through the commercial banks, right? But they are only for the purposes which have been mentioned in their laws. Small finance bank, very recent concept. You must have started hearing the names as iDhani Small Finance Bank, AU Small Finance Bank. Now what these small finance banks are, basically there is a concept called as financial inclusion. Financial inclusion means what? They want more and more people to come within the banking cycle or the banking industry services. And for that financial inclusions, there is a requirement of providing the funds even at the smallest level. किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए की जरूरत है तो उसको वो 10,000 रुपए का लोन भी मिलना चाहिए। आप बैंक्स में चले जाओ, आपको 10,000 रुपए की लोन की जरूरत है, वो 50 डॉक्यूमेंट बोलता है आपको, आप 50 डॉक्यूमेंट जमा करते करते कहां से आप वो लोन ले पाओगे?
And for that purpose, these small finance banks are being developed. This is developed exclusively in India. This is made in India concept. It is not there anywhere else. The small finance banks and private bank, payments bank, ये बहुत ही रिसेंट कंसेप्ट है और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट लाया है, क्योंकि लोकल जो बनिए होते थे ये लोगों को लूटते थे। उनकी लूट से बचाने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए द आरबीआई brought the concept of special small finance banks. Am I right? हाँ, रिस्की है बहुत ज्यादा आशुतोष। यहां ये लोग रिस्क कैसे अवॉइड करते हैं पता है? The small finance bank do not ask you to pay the EMI on a monthly basis. अब जिस बंदे ने 10,000 रुपए का लोन लिया, सपोज उसको तुमने 10% से लोन दिया, तो उसका ईएमआई मंथली ईएमआई जो आता है, मान लो 500 रुपए का आता है या 600 रुपए का, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसको कहा जाता है कि हमारा बंदा ना तुम्हारे पास रोज आएगा, उसको 20 रुपए देना। कितना? 20 रुपए। क्यों? तो वो 20-20 रुपए करके 600 रुपए रिकवर हुआ हर महीने का। साल का 7,200 रुपए रिकवर हो गया, 2 साल में पूरा पैसा वसूल विद इंटरेस्ट। दैट इज हाउ दे डू द रिकवरी। सामने वाले बंदे को भी प्रेशर नहीं आता है। दैट इज हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग एक्चुअली। रिक्शा वाला, जो चाय की टपरी वाला है, उसको भी लोन मिल सकता है आजकल बिकॉज ऑफ दी स्मॉल फाइनेंस बैंक कंसेप्ट। सीरियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके बगैर कभी हो ही नहीं सकता था। एंड दीज पीपल आर पेइंग ऑन अ डेली बेसिस 100 रुपया 200 रुपया इतना ईएमआई पे करते हैं। So these banks can be formed by the NBFCs, microfinance institutions, or even the local area banks. Can be promoted by individuals, cooperatives, or trusts, and these are established as companies but regulated by the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act. The Payments Bank आ गया, hang. Objectives of small finance bank: provision of savings for unserved or underserved sections, and supply of credit to small business units, small and marginal farmers, MSMEs, and unorganized sectors. This is very much important. वहां पे उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया. And the last category into the types of banks is payments bank. This is new banking model which is conceptualized by RBI again. It aims to offer the financial services to small businesses and low income people. It can carry the normal banking functions like accepting the deposits and giving the loans. नहीं, ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, इसीलिए बजाज फिनसर्व डिड द टाई अप विद आरबीएल. इसीलिए पेटीएम हैज डन द टाई अप विद सम बैंक. पेटीएम का पेटीएम फर्स्ट बैंक आता, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड आता है because Paytm is a payments bank, Airtel is a payments bank, and that's why ये इनका पर्पस क्या है कि आपके सेविंग्स को इकट्ठा करें और जहां जहां आपको जरूरत पड़े वहां वहां आप डायरेक्टली इनके ऐप के द्वारा पेमेंट कर पाओ. That's why they are called as what? Payments bank. Airtel payments bank, Paytm payments bank, but they cannot accept the deposits more than 1 lakh. At any point in time, you will be allowed to deposit maximum 1 lakh rupees in that. Am I right? So this was about the different types of bank. The next concept that we have to talk about is the functions of bank. Primary function is of accepting the deposit and granting of loans, and secondary is agency and utility function. Of course, these all things I'll start talking from the perspective of the details on Tuesday. Is it the Paytm wallet or UPI? Paytm wallet is a different concept altogether. We are talking about Paytm UPI. The Paytm UPI works under the Paytm Payments Bank. Am I right? So that's it for the day. I will stop here and will be continuing on Mangalwari, Tuesday, not tomorrow.
हाँ, tomorrow I am out of station, so will not be taking the lecture tomorrow, will be there on Tuesday. फिर वही हमारी रात को 9:30 से 11 मिलेंगे मंगलवार को। धन्यवाद।